Honorable Minister for Parliamentary Affairs. I want to quote some relevant rules. What we are witnessing is very unfortunate. Sir, rule 235. You all go back, I am calling him. Sir, rule 235. You all go back, I am calling him. If you are, they are not shouting, so I called him. If you are not shouting, I am going to call him. Then if you are shouting, I am not going to call you. Sir, rule 235, subclause 2. While the council is sitting, a member, subclause 2, shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noise or in any manner, disorderly manner. और सर लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे साहब के लिए मैं ये रूल पढ़ रहा हूँ. रूल 24 फॉर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी. This is about irrelevance of reputation. The chairman, after having called the attention of the council to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition, either of his own arguments or of the arguments used by other members in the debate, may direct him to discontinue his speech. हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है. बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन सर, और खड़गे साहब सेम चीज बोलते हैं. ये रिपीटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपोजिशन के लिए. और सर कांग्रेस के ये नए एक सदस्य आए हैं, इनके नाम है पवन खेड़ा. इनका अभी मैडम स्पीच भी नहीं हुआ. अभी सदन में मैडम स्पीच भी नहीं हुआ. नहीं है और रूल पहले रूल पढ़ना चाहिए. चलना चाहिए और जी को अपने सदस्य को समझाइए. So if you are shouting, I am not going to call you. Okay, you do what you like. Dr. K. धन्यवाद. Unless you go back to your seat, I am not going to call him. धन्यवाद I am calling सभापति you, please महोदय. go back to seat. मैं आज इस सदन के माध्यम से देश भर के Let him complete करोड़ों calling. बंजारा समाज की बातों के Let him complete and जुड़े calling एक him back. महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूँ. You cannot run the house. You should not. You cannot run the house. You cannot dictate the desk for the chair. और मानवता के उपासक थे. उन्होंने अपना समर्पण जीवन गरीबों, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी और बंजारों के हित के लिए अपना जीवन समर्पित किया. उन्होंने सत्य सेवा, समता, प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया था. उनकी शिक्षाएं आज भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सहित देशों के अनेक राज्यों में करोड़ों लोगों का प्रेरणा देती है. उन्होंने समाज, जाति और क्षेत्र के ऊपर उठकर एकता, नैतिकता, अनुशासन और राष्ट्र सेवा में जुड़ा हुआ है. इस महान संत सेवालाल महाराज का योग्य जो है सरकार के माध्यम से पूरा एक संदेश देना चाहते हैं. मोदी जी सरकार जिस तरह हमारे आदिवासी बिरसा मुंडा जी का जनजातीय गौरव दिन मनाकर आदिवासियों का जो सम्मान दिया गया, उसी तरह हमारे बंजारा समाज के जो नेता है संत सेवालाल महाराज का, therefore I request the government to declare the birth anniversary of Sant Sevalal Maharaj as a national holiday, organize nationwide commemorative program to spread his teachings among the younger generations. क्योंकि वो पर्यावरण प्रेमी थे और जानवर प्रेमी थे और ये महान आज के युवाओं को किस तरह प्रेरणादायक है. इसलिए आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट
to see that to promote research, publications and education institutions on his life and philosophy, and consider issuing a commemorative postage stamp and memorial initiative in this honor. So I request to this house, the government, to see that Sant Sevalal Maharaj birth anniversary has been declared as national level, and which will be a tribute not only to the great saint but also to the values of social justice, unity and service that strengthens our nation. Thank you, Chairman, sir. Now, Tiruchi Shivaji, under what rule you want to rise? 258, Under what rule you want to rise? 258. 258. 258. एक मिनट. So this is only a procedure, Shivaji. This is only a procedure. You give a notice, proper notice. I will call you on that subject. Please take your seat. Sir. You give a notice. I give a notice. I already given. 267. I already given. We can. You can raise your I have voice. given it, sir. Yes. Sir, I given today. Sir. This way you cannot force the chair. I have called him so many times. I am going to call him. But if you are shouting, I am not going to call. If you are shouting and you are not going back to your seat, I am not going to call. I called him so many times, not one time. I called him more than 15 times. But you should go back. This is not the way. You go back to your seat, I will call him. You can stand and shout, I am not going to call. Very clear. You can give order, you can give any notice, I will give you the chance. And now, leader of the opposition. Thank you, sir. Thank you, sir. आपने मुझे मौका दिया